क्या आपके बिजनेस में भी आपके कुछ ग्राहक आपको छोड़ देते हैं और आपको बुरा लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी सेवा देता हूँ, इतना अच्छा प्रोडक्ट बेचता हूँ, इतनी अच्छी कीमत पे बेचता हूँ, फिर क्यों कोई मुझे छोड़ के चला जाता है? Hello friends, my name is Sanjay Singh and I'm your sales coach. In this video I'm going to talk about the fact that customer attrition यानी कि वो कस्टमर जो आपको छोड़ के चले जाते हैं is a natural outcome. Customer attrition is an outcome. आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ग्राहक क्यों आपको छोड़ के चले जाते हैं ताकि हम वो कदम उठा सकें so that customers do not leave us. At least we can minimize the lapsation of customers from our system. The first reason, and research has shown that as high as 47% customers leave you not because they are unhappy with your product, not because they are unhappy with your price or service, they leave you because you don't remember them. कितनी छोटी सी बात है दोस्तों, आपने उनको याद नहीं किया, आपने उनको बर्थडे विश नहीं किया, आपने दिवाली पे उनको याद नहीं किया, आप उनके सामने रूबरू नहीं हुए, आपने उनको इग्नोर कर दिया। कस्टमर इग्नोर फील होता है, वो बोलता है जब ये बेचने वाला मुझे तवज्जो नहीं देता तो मैं क्यों अपना बिजनेस उसको दूं। सो प्लीज रिमेंबर, have some kind of a system and process to ensure that you keep on remembering your customers for different reasons. You can remember them on their birthday, on their anniversary. You can remember them every time you launch a new product. You can remember them by inviting them for a free trial offer. You can invite them for a free service camp. You can invite them for so many things. Whether they come or not, you are remembering them. The next reason that why customer attrition happens in your system is that customer gets bored out of you. You know, your visibility in the market is poor and the visibility of a competitor is very high, and the customer has this tendency to try another option. ये जो फितरत है ना कि एक और ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ये इंसानी फितरत है दोस्तों, और ये फितरत तब उत्पन्न होती है जब आपकी विजिबिलिटी इन द मार्केट बहुत पुअर है और आपके कंपटीटर्स की विजिबिलिटी इन द मार्केट बहुत अच्छी है। ग्राहक के दिल में उठता है, चलो इतने देर से संजय सिंह के साथ ले रहा था, एक बार इसको भी ट्राई करता हूं। तो व्हाट इज द लेसन देयर? प्लीज एंश्योर दैट you stay relevant in the mind of the customer. If you do not stay relevant in the mind of the customer will always go for an attrition. Another reason for which customers often leave you is the demand of the customer evolves over a period of time. अब देखिए, मैं एक केस स्टडी कर रहा था जहां टोयोटा का एक सेल्समैन ने एक गाड़ी बेची। टोयोटा की जो लोअर एंड कार है वो बेचा किसी ग्राहक को और भूल गया। धीरे धीरे उस ग्राहक की इनकम बढ़ी और ग्राहक अपग्रेडेड टू बाय अ होंडा सिटी। Now when the case study was done, why did he buy a Honda City? Because Toyota also had a Toyota Corolla. Toyota also had a Toyota Alexis. So why the customer did not go for a Corolla and why did he go for a Honda City? जब ये केस स्टडी किया गया दोस्तों तो पता चला कि ग्राहक की डिमांड जब इवॉल्व हो रही थी, वो ग्राहक की जब इनकम बढ़ रही थी, जब ग्राहक का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था, उसको एक बेहतरीन एक डिफरेंट जॉनर का कार लग रहा था, तो वो सेल्समैन डिड नॉट कीप इन टच विद द कस्टमर. ही वाज नॉट एबल टू गेज द इवॉल्विंग डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड अलाउड द कस्टमर टू get into an attrition mode, allowed the customer to go and give his money to Honda City. Do you understand what I mean? So you should always track the customer, maybe through a CRM software or maybe through any other process and systems, but do not forget to track the evolving nature of customer demand, because this can also lead to customer attrition. Friends, these are some of the common reasons why a customer attrition happens from your system, and I know that you understand that it is always less expensive to deal with an existing customer and 10 times more expensive to acquire a new customer. So please ensure that your customer attrition is very much in your control.
If you have liked this video, go down and click on the bell icon, subscribe to the channel, because I, Sanjay Singh, I'm going to come with one new video every day for you. I'm on a mission to empower 1 million salespersons with the science of selling before 2025 till I upload my next video tomorrow. Bye-bye.